हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेक्स्ट स्टेप बाय पारुल। और आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज हम कुछ ऐसे वर्ड्स देखेंगे, कुछ ऐसे वर्ड्स बोलेंगे जो कि मिस प्रोनाउंस किए जाते हैं जब भी हम इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश के सेंटेंसेस बोलते हैं। तो इन वर्ड्स को बहुत ज्यादा मिस प्रोनाउंस किया जाता है। तो आइए मेरे साथ हम ऐसे वर्ड्स को देखते हैं जो कॉमनली मिस प्रोनाउंस किए जाते हैं, और साथ ही साथ हम उनके मीनिंग्स भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड, द फर्स्ट वर्ड इज, इस वर्ड का मतलब होता है किसी भी चीज को बोलना, किसी भी चीज को प्रोनाउंस करना, राइट। इसको कैसे गलत बोला जाता है, मिस प्रोनाउंस किया जाता है। इस वर्ड को बोला जाता है प्रोनाउंसिएशन, राइट। बट ये प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, ये होता है प्रोनंसिएशन। मेरे साथ बोलिए, प्रोनंसिएशन। इसमें ओ जो होता है वो साइलेंट होता है, इसलिए हम इसको कैसे बोलते हैं, प्रोनंसिएशन। नेक्स्ट वर्ड, नाउ द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, इट इज द रैंक ऑफ द ऑफिसर इन द आर्मी, राइट। ये एक रैंक होती है ऑफिसर्स की आर्मी में। नाउ हाउ डू वी मिसप्रोनाउंस इट? We say it as colonel, colonel, but it is not colonel, but it is colonel. What is that? Colonel. Repeat after me. Colonel, colonel. Great. Now let's move forward. इस वर्ड का मतलब होता है नॉटी। तो कोई भी, अगर आपके सराउंडिंग में कोई भी नॉटी है तो आप इस वर्ड को यूज कर सकते हैं। नाउ हाउ डू पीपल मिसप्रोनाउंस इट? पीपल से इट एज मिस्चीवियस। ये मिस्चीवियस नहीं होता है, इट्स वेरी सिंपल, इट्स मिस्चिवस। व्हाट इज दैट? मिस्चिवस। रिपीट आफ्टर मी, मिस्चिवस। नाइस। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नाउ द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इज लाइन और अ रो। ओके, किसी भी चीज की लाइन, रो को हम क्या बोलते हैं? इसको लोग बोलते हैं क्यूई। ये क्यूई नहीं होता। द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इज क्यू। व्हाट इज दैट? क्यू। रिपीट आफ्टर मी, क्यू। नाइस। नेक्स्ट वर्ड, नाउ दिस इज वेरी इजी। इसका मतलब होता है नट। इट इज अ नट, राइट। नाउ हाउ डू वी प्रोनाउंस इट एज? Mispronounce it as almond. It's not almond, it's almond. What is that? Almond. Repeat after me. Almond, almond. Nice. Now इस वर्ड का मतलब होता है इट इज अ प्लेस वेर यू कीप बुक्स एंड यू कैन गो एंड रीड, राइट। इसको कैसे मिसप्रोनाउंस किया जाता है? एज लाइब्रेरी, लाइब्रेरी। ये लाइब्रेरी नहीं होता है, इसका मतलब होता है लाइब्रेरी। हाउ डू वी प्रोनाउंस इट? लाइब्रेरी। रिपीट आफ्टर मी, लाइब्रेरी। नेक्स्ट, नाउ द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हम कुकिंग के लिए, किसी डिश बनाने के लिए यूज करते हैं, राइट। हाउ डू वी मिसप्रोनाउंस इट एज? रेसिपी। तो सी पर ज्यादा एम्फोसिस ना करते हुए हम इसको बोलेंगे रेसिपी। व्हाट इज इट? रेसिपी। रिपीट आफ्टर मी, रेसिपी। नेक्स्ट, दिस इज वेरी इजी, एवरी वन ऑफ अस नोज इट। इसका मतलब होता है इट इज अ डे ऑफ अ वीक, राइट। नाउ हाउ डू वी प्रोनाउंस इट एज? मिसप्रोनाउंस इट एज वेडनेसडे। तो वेडनेसडे नहीं बोलना है, हमें कैसे बोलना है? वेंसडे। तो यहाँ पर जो फर्स्ट डी है
वो साइलेंट है, उसको हम कैसे बोलेंगे? वेंसडे। रिपीट आफ्टर मी, वेंसडे। नेक्स्ट, किस किस को पसंद है? एवरीवन लाइक्स इट, राइट? इसको कैसे बोलते हैं लोग? चॉकोलेट। इट्स नॉट चॉकोलेट, ओ पर ज्यादा एम्फेसिस नहीं करना है, इट्स सिंपल चॉकलेट। व्हाट इज इट? चॉकलेट। रिपीट आफ्टर मी, chocolate. Next, now the meaning of this word is a person who doesn't believe in God. तो उनको लोग इस वर्ड को मिसप्रोनाउंस किया जाता है एज अथीस्ट। ये अथीस्ट नहीं है, इट्स एथियस्ट। व्हाट इज इट? एथियस्ट। रिपीट आफ्टर मी, एथियस्ट। चलिए, आई होप यू हैव गॉट ऑल द प्रोनाउंसिएशन। एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं एक साथ सारे वर्ड्स की। द फर्स्ट वर्ड इज pronunciation. What is it? Pronunciation. Next, kernel. What is it? Kernel. Mischievous. Mischievous. The fourth word is Q. What is it? Q. Fifth, almond. What is it? Almond. Sixth word is library. What is it? Library. Seventh, recipe. Repeat after me, recipe. Next, Wednesday. What is it? Wednesday. Ninth word is chocolate. One more time, chocolate. And the last word is atheist. आई होप आपको ये सारे वर्ड्स अच्छे से प्रोनाउंस करने आ गए होंगे। हम इसी टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय।